Prime Minister Narendra Modi meets Bangladesh's Chief Advisor Muhammad Yunus on the sidelines of the BIMSTEC summit in Bangkok on Friday. This was their first meeting since the ouster of Sheikh Hasina from Bangladesh. India took up the issue of atrocities against Hindus in the neighbouring country during the talks. माइनॉरिटीज़ की, अल्पसंख्यकों की जो वहाँ पे हालत है और इस विषय को लेके प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है और उन्होंने आशा जताई कि बांग्लादेश सरकार इस विषय पे अपनी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेगी और इन चीज़ों को आगे इनकी जांच करेगी। The Yunus regime, on its part, raised the asylum given to Sheikh Hasina by India. আমাদের যেগুলো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যতগুলো বিষয় ছিল সবগুলো বিষয়ই আমাদের চিফ অ্যাডভাইজার মহোদয় সেই মিটিংয়ে বলেছেন। যেমন শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ বিষয়ে কথা হয়েছে, শেখ হাসিনা যে ওইখানে বসে অনেক ধরনের ইনসেন্ডিয়ারি কমেন্ট করছেন সেগুলোর বিষয়ে কথা হচ্ছে। शेख हसीना का सवाल है और उनके सिलसिले में जो बांग्लादेश की ओर से हमारे पास इस मुद्दे पे एक निवेदन आया है। इस समय इस विषय पे कुछ और कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। Prime Minister Modi reiterated India's support for a democratic, stable, peaceful and progressive Bangladesh. The talks between the two leaders takes place just days after Yunus invited China to expand its influence in the region. 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. In the meeting on Friday, the two leaders appeared to break months of chill. Yunus presented a throwback photo to Prime Minister Modi. The portrait showed Prime Minister Modi presenting a gold medal to Yunus at the 102nd Indian Science Congress in 2015. If you like the video, do like, comment, share and subscribe. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.